Okay, there is a question from Apu that when to use try and catch. Very simple, that whenever you are using some statement, just like we are writing in bank account class, these are the statements. Okay, specifically this particular statement, this particular statement, this particular statement may cause exception. If it is causing an exception and if it is going to be a checked exception, then we have to use a try and catch. To understand in more detail, we will again go to the class bank account one more time. Try to understand bank account class. For abstract level, we are not taking much more property. We are taking only few. That is account number, first name, last name, and balance. Then we are using an account number C2, which is going to be part of a class and not part of an object. That we already studied that whenever some static member is there, the static is expected to be part of a class and not a part of an object. That means once we are going to create an object, this is not going to be used to identify the state of an object, because static is the property or method which is going to be same for all object. Doesn't matter which object it is. If object 1 is there or object 2 is there, he is expected or it is expected to share the same copy of static data or static method. Then we are writing constructor. Pretty simple. Why we are writing constructor? We are writing constructor to initialize an object before its use. Okay. Then we are having some set and get methods, just like this. That also we had gone through that set is used to set the value of the property, while get is used to get a value of a property. And then it is having two more methods. Okay, apart from toString, deposit, withdraw. Okay. There is having two more methods, deposit and withdraw. These methods are expected to deposit an amount into the bank account or withdraw some amount from the bank account. Now question comes is that whenever we are going to deposit an amount, okay, and if suppose that amount तो नहीं हो रही है सर जो आप पढ़ा रहे हैं, नहीं हो रही है. So अच्छा एक्सेल ही आपको शेयर हो रहा है अभी तो? यस सर. अरे यहाँ पे भी माउस का पॉइंट हो रहा था तो हम सोच रहे थे अब ये दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट हो रहा था माउस कर्सर. लेकिन पढ़ा तो कुछ और रहे हैं. पढ़ा तो मैं बैंक अकाउंट क्लास का जिक्र कर रहा था ना, जल्दी बोलना चाहिए. सर मुझे भी पहले यही लग रहा था कि आप अभी आएगा. So we are discussing about bank account class. Bank account class having certain properties. One static member, as we discussed, the static is used to make a part of a class, while non-static is going to be part of an object. Then we are used one constructor, and then having some set of get and set methods. Obviously, we are not providing, okay, set account number method, because account number is expected to be read only. Once we are assigning that value to the account number, it is not expected to be changed. So there is no set account number method as such. Apart from that, toString method is there. toString method is going to return a string representation of an object that we can decide that what has to be returned. Apart from that, there is two more methods, that is deposit and withdraw. We were discussing about deposit method. Deposit method is used to deposit amount into a bank account, and it may happen that user is going to use some mechanism to send amount to this particular deposit method, and if that particular mechanism where we are entering the data, is going to provide the negative value input, then obviously it is not going to happen purposefully. It may happen some accidentally. Instead of 0 or something, we are going to enter minus, then we are entering some value, and it goes like that one. Instead of depositing an amount
into the bank, it will withdraw. Why it is going to withdraw? Because if you are going to add minus value into the any number, doesn't matter what number it is, the number is going to be reduced. So this is what we don't want. That's why we are checking for that. Okay. So we are checking out whether the amount is less than 0 or not. If it's 0, doesn't matter. But if it is less than 0, we are saying that this particular state is an unexpected state. We are saying that this state is an unexpected state. So we are raising an exception here. We are raising an exception here. Because if we are going to handle it here, then question comes that how we are going to handle it. There are the different mechanisms to handle it. One of the mechanism is by using system.out.println. Another mechanism is that make positive of the negative, that is if amount is negative, इसको positive बना दो. लेकिन remember, आप खुद इसको positive बनाने का कोई मतलब नहीं बनता, because we don't know whether amount is right or wrong. Because अगर गलती से enter amount हुई है तो हो सकती है गलत भी हो. So we are not handling that particular exception here, but we are raising exception here. तो raising exception के लिए हमने क्या किया? एक खुद का क्लास लिखा, invalid amount exception, उसका एक ऑब्जेक्ट बना दिया और उसको हमने थ्रो कर दिया. This is called raising exception. This is the process of raising exception. And this is going to be same throughout all programming language nowadays, with little bit variations. आप C# में जाओगे तो ऐसा ही कोड आएगा. Even Python में वैसा ही कोड है. Obviously, little bit different है. It is not exactly 100% same, कभी भी नहीं होगा. लेकिन आप C# में जाओगे तो it is 90-95% it is going to be same, because both C# and Java are inspired from C++. And C++ is having the mechanism of exception handling. So we are raising exception. As it is raising an exception, what is type of E? E का type कौन सा है? Invalid amount exception है. यहाँ throw clause है. तो कंपाइलर को पता चलता है कि यहाँ कुछ एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है. कंपाइलर चेक करेगा कि आपने ट्राई एंड कैच लिखा है कि नहीं लिखा है. अगर ट्राई एंड कैच नहीं लिखा है, दैट मींस यू आर नॉट हैंडलिंग इट, तो आपको कंपाइलर इंस्ट्रक्ट करेगा कि इसको हैंडल करो. जैसे कि मैंने अभी यहाँ से निकाल दिया ये कमेंट मार के. ओके, अनहैंडल्ड एक्सेप्शन ऑफ टाइप इनवैलिड अमाउंट एक्सेप्शन. ओके, तो आपको इसको ट्राई एंड कैच में लिखना पड़ेगा. लेकिन हम यहाँ ट्राई एंड कैच लिखना नहीं चाहते, इसलिए नहीं लिखना चाहते कि हम यहाँ एक्सेप्शन हैंडल करना ही नहीं चाहते. सो वी आर यूजिंग थ्रोज क्लॉज. थ्रो क्लॉज से क्या पता होगा कि हम बोल रहे कि ये जब एक्सेप्शन है, ये एक्सेप्शन इस मेथड में रेज हो सकता है. रेज हो सकता है, नॉट रिक्वायर्ड टू बी रेज. रिमेंबर, 1 लाख ट्रांजेक्शन में से हो सकता है एक आधा ट्रांजेक्शन है जिसमें ये गलती हो सकती है. आई एम नॉट सेइंग 1 out of 1000 too. I am saying 1 out of 1 lakh too. So through throws clause is there. Same mechanism we are using for a withdraw method too. With less than amount, we are doing the same thing again. Another thing is that if user is trying to withdraw an amount which is going to be greater than balance, जो कि possible नहीं है, we are handling that also, and we are raising exception, insufficient balance exception. इसलिए रेज कर रहे हैं क्योंकि हमें इसको हैंडल नहीं करना है. हैंडल करना है तो ट्राई एंड कैच करना है. तो ये दो एक्सेप्शन हमने लिखी है. कुछ खास कोड लिखा नहीं है हमने. Of course, you can write little bit more. And then we are creating instance of bank account. Bank account का instance हम बना रहे हैं. इसको हम प्रिंट कर रहे हैं. We are printing it. Then we are using try and catch. Why we are using try? Because this is the one of the statement which may raise an error
which may raise an exception, which is going to be of checked type. And if it is like that one, compiler says that you have to handle it. Compiler बोलेगा कि आपको इसको handle करना है. For example, मैं इसको copy करता हूँ, okay, और यहाँ print कर देता हूँ. तो बोलेगा same error, unhandled exception, invalid amount exception, okay? Add throws clause or surround by try and catch. So दो alternative exception handle करने के, एक throws clause use करो, which is used to throw an exception, and surrounding try and catch is used to handle exception. तो try and catch is used to handle exception. अगर exception raise होता है तो catch block में आएगा, क्योंकि हमने ऐसा कुछ कोड लिखा था, कैच तो बाद में लिखा था. We had written the code invalid amount exception without stack trace. Similarly, catch balance exception and without stack. So when try block executes and one of the exception occurs, for example, invalid amount exception occurs, it comes to this particular catch block. इस कैच ब्लॉक की बॉडी एग्जीक्यूट होगी. अगर इनसफिशिएंट बैलेंस एक्सेप्शन रेज होता है तो इधर आएगा, चेक करेगा कि कैच मैच होता है कि नहीं होता है. नहीं होता है तो नेक्स्ट कैच पे जाएगा, चेक करेगा मैच होता है कि नहीं होता है. मैच करता है तो उस कैच बैक का बॉडी एग्जीक्यूट करेगा. अगर नहीं होता है तो अगले वाले को जाएगा, चेक करेगा कि इधर एक्सेप्शन जो रेज हुआ है इसका टाइप एक्सेप्शन है कि नहीं है. अगर है तो उसका ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा. And final statement, which is always going to be executed, doesn't matter whether exception is raised or not raised. Exception raised हुआ तो भी finally में आएगा, exception raised नहीं हुआ तो भी finally में आएगा. So this is what exception handling mechanism is all. When to use try and catch? We have to use try and catch whenever some of the statement is raising an error. We are interested to handle that particular error or exception. Then use try and catch. ठीक है, आपको समझ में आया? यस सर. मतलब हर एक स्टेटमेंट के लिए मुझे अलग अलग कैच में रख के उसे चेक करवाना पड़ेगा क्या सर? कि मतलब नहीं, हर एक स्टेटमेंट को मत किया करो, हमेशा ब्लॉक ऑफ द स्टेटमेंट लिखा करो. अदरवाइज देखो, अदरवाइज क्या होगा, इसके लिए एक अलग ट्राई कैच होगा, इसके लिए अलग ट्राई कैच होगा, इसके लिए अलग ट्राई कैच होगा. आपको अगर पता है कि इसमें से 2-3 स्टेटमेंट ये है कि सर एक काइंड ऑफ एक्सेप्शन रेज करी है, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेम टाइप, व्हाई टू राइट डबल ट्राई एंड कैच? 2-3 बार लिखने की क्या जरूरत है? नॉट रिक्वायर्ड. ओके. So, any other questions? Next class onwards, we are going to start with इनपुट आउटपुट और थ्रेड. क्या शुरू करेंगे सर? इनपुट आउटपुट. सर ये फाइल शेयर कर देना सर. अरे शेयर करने से आपको आदत लगती है कॉपी पेस्ट करने की. नो सर, कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं सर. क्या होता है कि सर अगर बीच में नहीं बनता है तो एक रेफरेंस मिल जाता है. अच्छा, यस सर. लोकेशन. So my exceptions. Bank account insufficient. Copy. Coming back to the chat.
फाइल्स, फोल्डर, ड्रैग एंड ड्रॉप करनी। ठीक है बेटा, कर दिया मैंने। इस चैनल के फाइल्स में जाके ओओपी का एक फोल्डर बना दिया, उस फोल्डर में डाल। ठीक है सर। एक्चुअली ओओपी की फोल्डर की जरूरत नहीं थी। So any other questions? नो सर। तो इनपुट आउटपुट का हेलो यस यस बेटा। सर, एक्चुअली प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन के बारे में पूछना था। बोलो। सर उसमें मतलब हमें इंट्रोडक्शन देना है, पूरा प्रोजेक्ट दिखाना है? 50% प्रोजेक्ट का प्रोग्रेस बताना, मिनिमम 50%। मतलब काम कितना हो चुका है वही ना सर? हाँ हाँ, एक सर पीपीटी वगैरह कुछ बनानी पड़ेगी या डायरेक्ट प्रोजेक्ट को ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इतना कुछ कर चुके हैं हम लोग? वो तो मेंशन डिपेंड करेगा कि हाउ यू आर एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट योर वर्क। सर डायरेक्ट सर प्रोजेक्ट अगर दिखा दें कि सर इतना इतना हो चुका है, ये किया हुआ है। वो कैसे चलेगा? एक्चुअली इस एक्सपेक्टेड भी ये है कि आपका प्रोजेक्ट एनालिसिस और सम सॉर्ट ऑफ कोडिंग, यूज केस डायग्राम्स, वो सब कुछ आपके रेडी होने चाहिए, और ईआर डायग्राम या क्लास डायग्राम ठीक है। और सम सॉर्ट ऑफ कोडिंग। यस सर। तो मेरी आवाज आ रही है? यस सर। लुकिंग फॉर वेयर आई अटेंडेंस मिलेगा तो ध्रुव है मीटिंग। ओके सर। ध्रुव का क्या इशू है, कहाँ है बेटा? वो तो किसी को पता है क्या? नो सर। अभी देख 20 स्टूडेंट है यार, 20 स्टूडेंट मतलब एक तो ऐसे कैसे होगा? आई लाइक टू इंटरेक्ट वन बाय वन। मार्क्स देके आपको मुझे वन बाय वन इंटरेक्ट करना है।